Good afternoon, everyone. Welcome back after the festivities. Let us dive back into the chapter on directions in which is part of the logical reasoning. Uh, as Ravi sir Good had afternoon. told you, yes, sir. So please introduce the chapter, sir. Yes, madam. Yes, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. After the festival, we are all meeting. Happy to see all the students, and this is a chapter comes under logical reasoning, which is called a direction sense test. Actually, you all know very well. Actually, here the directions test is very simple and easy to understood also. And direction test is a very easy, and 5 marks will be appearing. Five marks questions will be appearing in the question paper, and this is a very simple also. And directions is like whether we have the total 8 directions. So we can't hear you. Based on direction. Hello, madam, can you able to hear? And now we can hear you. Based on the 8 directions, which are north, west, south, east, and Sir. They're not able to hear you. Okay, I think there is some issue with sir's network. So, welcome back, all of you. A very good afternoon to Rupali, Lavisha, Rajveer, and Satyam, and all the others who have joined on the Zoom, and also those who have joined on the YouTube and the portal. So, a welcome to all of you, and a very good afternoon to you. So what we are going to do is, as far as possible, we are going to do as many sums as possible, say up to 350. Okay, and if we are able to complete it before, then all the more better. And then whatever a little bit of questions are remaining of the odd man out, okay, that portion is remaining from the number series coding and decoding, that I will take in the last 10 minutes. Okay, so last 10 minutes we will be taking the chapter on coding decoding portion that is remaining still. So those 5 to 10 questions, whatever we are able to do in 10 minutes, we will be able to do them. We'll do them very peacefully, so that you don't get any confused. I'm not going to rush into anything. Even today's session, which seems very easy, but for that you need to visualize. So as I always tell you, that some people are very good at visualizations while others are not. So those who are able to do it fast, please bear with your fellow colleagues, okay, because some of them may take time to understand. इसमें जो है डायरेक्शंस का सम में आप ऐसा सोचिए कि आप खुद वहां जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको आसानी होती है। अगर वो बोलते हैं सुरेश टर्न्स लेफ्ट, तो आप खुद देखिए ना, खुद सोच के देखिए कि अगर मैं लेफ्ट को मुड़ा तो मैं कैसे जाऊंगा, किस तरह, मतलब मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, पूरब की तरफ होगा या पश्चिम की तरफ होगा, तो उस टाइप की चीजें आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। ओके,
और सर ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि 5 मार्क्स के लिए आने ही वाला है, और आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के नहीं है, तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंटली पढ़ना है। उन्होंने क्या दिया है उसका टेक्निक भी मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती थी, तो उसको देखिए, अगर आपको वो यूजफुल लगे तो वो टेक्निक यूज कीजिए। ओके, तो ये अभी सर ने बताया है। So now, the 8 directions that sir was telling was about north, south, east, west, and then ये हमें हरदम ही मालूम रहता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अभी इसमें दो कॉन्सेप्ट और है, एक है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज मतलब सुई की नहीं, जो घड़ी की सुई होती है ना, घड़ी की सुई, हो गया। घड़ी की सुई जिस तरह घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ डायरेक्शंस में, तो मेरा क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इस तरह से मैं जाती हूँ। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती हूँ तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। ओके, तो इस तरह से जाती हूँ। ठीक है, तो इस ये आपका प्राइमरी है कि आप जैसे वो बोलेंगे, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो किस तरह घूम रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा। अब रही बात नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर ये तो 4 मेन डायरेक्शंस है। उसके बाद ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अभी इसमें ये रखिए, अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ और मैं यहाँ पूरा घूम के वापस यहाँ पे आती हूँ, तो ये क्या हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो उसमें कितना हो जाता है, उसमें हो जाता है 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कल है वो कितने हैं, 360 डिग्रीज का। उसके बाद जो सपोज नॉर्थ टू ईस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये 90 डिग्रीज है, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हाँ, और अगर नॉर्थ से साउथ में जाऊंगी तो ये 90 और ये 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन है, उसमें से एक एंगल 90 होगा, तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल 90 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्थ साउथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और तो जो नॉर्थ साउथ है ना, वो आपका जो ईस्ट वेस्ट है ना लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, उसको क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ये भी याद रख लीजिए कि नॉर्थ साउथ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द ईस्ट वेस्ट लाइन। अभी ये हो गया। फिर कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि 45 डिग्रीज पे चलते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि इनमें से किसी भी एंगल में, ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्रीज है। चाहे आप इसमें ले लिए, चाहे आप इसमें ले लीजिए। ओके, so all the angles are 45 degrees. So north to north is 45, northeast to east 45, east to south is 45, इस तरह से। तो अगर आप देखेंगे तो कितने 45 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 45 डिग्रीज इंटू 8 कितना हो गया, 0, कैरी ओवर 4, 32 + 4 36, है ना, 360 डिग्री आ जाता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि पता नहीं कितना एंगल है, तो क्या कीजिएगा, 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको 45 मिल जाएगा। ओके, ये आपका जो है ये बेसिक है, तो उससे क्या होगा, आपको समझने में, सोचने में आसानी हो जाएगी। फिर क्या बात आती है कि अगर मुझे ये लगे कि मैं याद कैसे रखूं, तो अगर मैं सेंट्रल इंडिया में रहती हूँ, मध्य प्रदेश या उस तरफ रहती हूँ, तो मेरे लिए नॉर्थ क्या होगा, मेरे लिए नॉर्थ होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ तो मैं किसको नॉर्थ बोलूंगी, तो मैं उसके बाद मैं बोलूंगी जम्मू है नॉर्थ, है ना, और जम्मू वाले क्या बोलेंगे, रशिया है नॉर्थ। हाँ, इस तरह से आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए।
फिर ईस्ट में हमें मालूम है कौन सी सिटी है, कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता अगर हम सोचेंगे तो वो हमारे ईस्ट में है। अगर हम सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो वो हमारे ईस्ट में है। हमारे अभी अगर हम सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो साउथ में क्या आ सकता है, चेन्नई आ सकता है, और वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई आएगा, ठीक है। ये चार डायरेक्शन तो हम लोग ज्यादा यूज करते तो हमें मालूम भी है, लेकिन अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में बोलूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, असम, मिजोरम, है ना, नागालैंड, वो सब जो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं उनको, वो सात स्टेट्स वहां के आ जाएंगे। साउथ ईस्ट में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हमको कौन दिखेगा, पौंडीचेरी, बहुत सुंदर जगह है। तो पौंडीचेरी, फिर साउथ वेस्ट में अगर जाएंगे तो एकदम साउथ वेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर ज्यादा नहीं सोचेंगे तो गोवा की तरफ हम हमें याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखें। और नॉर्थ वेस्ट तो हमें मालूम है जयपुर है, राजस्थान है। तो वो सारा इलाका जो है उसको हम नॉर्थ वेस्ट में सोचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये सब जो है उसको मैं एक बार और रिपीट करूंगी नीचे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर if someone is facing the north, okay, if someone is facing the north, मतलब कोई खड़ा है, ये उनके बाल है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, his face is towards facing north। इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ तो ये उसका राइट हैंड हुआ। तो ये राइट हैंड किसको पॉइंट करता है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड, दिस इज हिज लेफ्ट हैंड, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुंह किसी का नॉर्थ की तरफ है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, शायद दाया होगा ना, तो लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट को पॉइंट करेगा, और जो राइट हैंड है उसका वो ईस्ट को पॉइंट करेगा। ऑब्वियसली सिर के पीछे का हिस्सा जो है वो साउथ को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये हो गया जब आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। इसमें हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे मैं बता रही हूँ। सो यू हैव टू जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। आई मीन केयरफुल से ज्यादा है, आप एक बार उसको याद कर लो, आप ज्यादा सोचो नहीं उसके बारे में, क्योंकि वहां पे आप टाइम सेव कर सकते हो। आइदर अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, इफ द पर्सन इज फेसिंग साउथ, if the person is facing south but is upside down, so if the person is upside down, मतलब वो सिर के बल खड़ा है। अगर वो सिर के बल खड़ा है और वो साउथ की तरफ देख रहा है, फेसिंग साउथ, तो उसका भी यही आएगा। उसके लेफ्ट जो है वो किसको, वेस्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर कोई बंदा अपसाइड डाउन है तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड है ना, वो उसका वेस्ट की ओर पॉइंट करेगा। मतलब जो इफ एनी पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, देन द वेस्ट विल बी ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड। आप सब याद मत करो, सिर्फ एक याद करो कि उसका लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट को जा रहा है। वही वही बंदा अगर सिर के बल खड़ा होता है लेकिन ही इज फेसिंग द साउथ, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो भी वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा, ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन ही इज फेसिंग साउथ, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन ही इज फेसिंग साउथ, देन this will be his right hand side, okay, then this will be his right hand side, okay। उल्टा नहीं करते हम, इसके लिए दिखा देते हैं आपको। तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। हिज लेफ्ट विल बी टुवर्ड्स हिज ईस्ट, ये उसका लेफ्ट है ना, अगर ये उसके ये राजवीर है तो हिज लेफ्ट इज फेसिंग टुवर्ड्स द
east. Okay, and his right is facing towards the west. ओके सो और ये जो है ना उसका ऑपोजिट होगा. इफ द पर्सन इज अपसाइड डाउन एंड फेसिंग नॉर्थ, तो भी उसका जो लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट को पॉइंट करेगा. यहाँ लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट को पॉइंट करता है, यहाँ जो है उसका लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट को पॉइंट करेगा. ओके ओके crystal clear. Okay, very good. So now एक आराम से वाला कर देंगे कि दिस एंगल is 45 degrees, okay, and this angle is 90 degrees. Person facing north is left is towards the west. Okay, person facing south is left is towards the east. So when is facing north and when is facing south, ये उसका जो बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगा. यही आपको ऐसे पोजीशन दिखा दी कि वो सिर के बल खड़ा रहेगा तो उसका कैसे होगा. ठीक है, तो when he is facing south, then what will happen, his left hand will be to the, if he is facing south, left is towards the west. Okay, left is towards the west. And if he is facing north, then left is towards the east. Okay, और कुछ नहीं ना. चलो, let's start. Let's start from the very beginning. Yes, Rajveer is saying clear. बाकियों को समझा है कि नहीं? आज इधर का चैट डिसेबल्ड है क्या? Working. Okay. Now let us go to the sums. Now that is okay, na? See what will happen in these sums, the more you practice, the more you are able to visualize. तो उतनी सी बात है, ज्यादा उसको आप ऐसा मत सोचिए कि किसी ने लिखा है कि भाई डायरेक्शंस में क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है. कोई बात नहीं, हमें इसमें ये देखना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Okay, what can be asked is in which direction is the person facing. This is one type of question. In what direction is the person facing? Then in what direction is he from starting point, जहां से उसने शुरू किया था वहां से वो कहाँ पहुंचा है. तो पहला है कि जनरल डायरेक्शन है, ईस्ट में, ईस्ट की तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है, ऐसा. दूसरा है रेफरेंस टू, देयर इज अ रेफरेंस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से वो कहाँ है. या उल्टा भी हो सकता है कि जहां वो खड़ा है वहां से उसका, जैसे सपोज वो स्कूल आ गया तो स्कूल से घर कौन से डायरेक्शन में, ये भी पूछा जा सकता है. पर यूजुअली हाउ इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. और तीसरा है हाउ फार इज ही, हाउ फार. तो इसमें ये जो पहले दो है ना वो आपको सिर्फ डायरेक्शन से बताने हैं और कैलकुलेशन वाइज तो थर्ड में आता है. मतलब बहुत सिंपल सा वो रहता है.
और आपको हर बार कभी भी क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, तो आप उसको इस तरह से, मतलब प्रैक्टिस समय तो लिख लीजिए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। ये आप हर बार लिख के रखिए। कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए तो आप लिख लीजिए, तो बार बार आपके वो दिमाग में आएगा कि डायरेक्शन इस तरह से है, डायरेक्शन इस तरह से है। ओके। मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ये उसका पॉइंट ए हो गया। एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है, मैं कभी कभी कुछ छूट जाता है, इसके बाद भी छूटता है मेरे से, लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ। ही वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ, तो मैं क्या लिखूंगी, 1/s, मतलब क्या हो गया, 1 टूवर्ड्स द साउथ। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। ठीक है, पहले वाला जो पॉइंट रहता है उसमें वो बताएंगे डायरेक्शन, उसके बाद साहब लेफ्ट राइट में द वर्डिंग विल बी सच दैट इट विल बी इन लेफ्ट एंड राइट। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? ओके, सो देख लिया मैंने, 1 2 3, 3 बार उन्होंने वैल्यूज लिखे हैं, और मेरे पास भी 1 2 3 उसी तरह के वैल्यूज आ गए। ओके, सो उसमें अभी मुझे क्या करना है, मैं इधर लिखती हूँ, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा साउथ, और ये मेरा वेस्ट। नाउ ही स्टैंडिंग हियर, तो साउथ डायरेक्शन इधर आएगी ना इसकी, तो दिस ही इज ट्रैवलिंग हाउ मच, 1 किलोमीटर। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों लेफ्ट राइट नहीं लिखती, इसलिए इसमें सिर्फ यहाँ पे एल लिखती हूँ। अगर वो राइट में भी घूम रहा है तो भी मैं एल इसलिए लिख रही हूँ ताकि मेरा वो रेफरेंस जो है ना वो हर बार एक जैसा हो, तो मुझे प्रैक्टिस के समय याद नहीं करना पड़े कि मैं क्या रेफरेंस लेती हूँ। तो इफ समबडी इज वॉकिंग साउथ, तो हिज लेफ्ट विल बी ऑन दिस डायरेक्शन। तो he is walking 1 kilometer to the south, then turns left and walks 1 kilometer। तो यहीं पे वो मुड़ने वाला है, यहां से वो कितना जाएगा, 1 किलोमीटर। कहाँ तक? और यहाँ तक। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, तो यहाँ पे भी उसका एल यहीं पे है, लेफ्ट इधर ही है, और वो वॉक्स 1 किलोमीटर, तो 1 1 1। तो अभी यहाँ खड़ा है वो बंदा। ओके, सो सपोज ही दिस इज द एंड पॉइंट। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो आप दिख रहे हैं यहाँ जा रहा है, ये बंदा यहाँ जा रहा है, तो ही इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, राजवीर नॉर्थ, रूपाली करेक्ट, करहीन करेक्ट। सो नेक्स्ट, सुरेश वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट 2 miles towards the south, turns right, walks 1.5 miles towards the half a mile, then turns back. Okay, and back. In which direction is he facing? Okay, just a minute. Okay, in which direction is he facing? तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन विच डायरेक्शन, तो फर्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन है ना उस तरह ये आ गया ठीक से।
he walks 2 kilometers to the south. ये हो गया 2. So this is his left hand side. Turns right. So turns right and walks 1.5 meters. Then यहाँ उसका लेफ्ट आ गया, यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ आया. Okay, and then he's turning left to 0.5 miles. Okay, and then he turns back. ठीक है, अब क्या है, यहां तक पहुंचा था वो, यहां तक पहुंचा था, बट ही टर्न्स बैक. ओके, बट ही टर्न्स. तो यहां से वो वापस इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जहां जाना था वो पहुंचा, लेकिन वहीं से वो टर्न बैक किया, तो यहां जा रहा है. तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अभी वो इस तरह जा रहा है, तो मेरा ये क्या होना चाहिए, दिस इज माई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट. विच डायरेक्शन इज ही गोइंग? ही इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, yes, Lavisha, correct. Yes, Rajveer, Ravisha, Rupali, every Farheen, all are correct. Yes, very good. Now let us go to the next sum. A man starts from a point, walks 4 miles towards north, turns left and walks 6, turns right and walks 3, and again right and walks 4, and takes rest for 60 minutes. अब ये टेक्स रेस्ट फॉर 60 मिनट से हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक्सेलरेशन या उसकी स्पीड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इसलिए हमें इससे कोई फर्क. एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स. ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 किलोमीटर्स. सो वॉक स्ट्रेट 2 किलोमीटर्स मतलब ये जो राइट डायरेक्शन में उसने 4 पहले चले थे ना, उसके बाद +2 हो जाएगा. सेम डायरेक्शन में ना, जहां से वो चल रही थी वहां पे उसने आधा घंटा आराम कर लिया और उसके बाद चलने लगी, तो स्ट्रेट 2 किलोमीटर्स इन द सेम डायरेक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमने ऐसे लिखा है. एंड वॉक्स 1 माइल. व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? ओके, so suppose I am here, the man is here, and he starts walking from point, walks 4 kilometers towards north. Okay, ये हो गया मेरा 4. So this is my left, and walk 6 miles towards the right. 6 miles towards the, because यहाँ 4 kilometers towards the north, L 6 kilometers. उसके बाद वो right में move करेगा. This is his left. Then he's moving right 3 kilometers. Okay, right 3 kilometers. So this is his left, and then goes right 4 kilometers. Goes right 4 kilometers. Okay, so he's gone right 4 kilometers. He takes rest. Okay, he takes rest. He walks 4 kilometers यहाँ तक, takes rest and gets up and walks 2 kilometers 2 miles straight in the same direction. अभी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी से दिया है कि द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी द सेम एंड ही इज वॉकिंग स्ट्रेट. मतलब ऐसा नहीं है कि वहां से उठ के वो लेफ्ट में 45 डिग्री से चला गया, उससे ऐसा कुछ नहीं. बिल्कुल सिंपली एकदम अच्छे से कोई भी डाउट आपके क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा. उसके बाद 2 किलोमीटर आएगा. तो इसमें आप अप्रिशिएट कीजिए कि नीचे वाली जो लाइन है वो भी 6 किलोमीटर्स है. वो पहले 4 किलोमीटर और ऊपर क्या हुआ, 4 किलोमीटर के बाद रेस्ट लेके 2 किलोमीटर चला है. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ उतना ही. सो द सेम डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड एज ही हैड डन अर्लियर. सो 6 किलोमीटर्स. दैट इज व्हाई दिस पॉइंट that we will have here, this point is parallel to the starting point. Okay, now same direction and turns right. Okay, so this is his left and turns right. Okay, तो लास्ट वाला है ना, इन सब के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है टर्न्स राइट. ठीक है, तो अभी ये लेफ्ट यहां तक आ गया,
मोस्टली क्वेश्चन यही तक रहते, लेकिन इन्होंने छोटा सा क्या कर दिया, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल. ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि हमें ये भी देखना है कि कितने नंबर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये देखो इन्होंने क्या किया, 1 माइल को वर्ड्स में लिख दिया, तो 6. देर आर 6 नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि 4 और 2 है ना, 4, 5 एंड 6. ठीक है. सो और उसी इसीलिए मैं 30 मिनट्स पहले ही काट दी, क्योंकि दोज आर इन मिनट्स, आई वांट समथिंग इन माइल्स. ओके, सो आई नीड टू हैव द क्लैरिटी ऑफ दैट. Secondly, I just wanted to show you that sometimes we are concentrating only on numbers, but if something is given in words, then also you have to pay attention. Okay, and turns right and walks 1 mile. अभी यहाँ पे वो लेफ्ट पे था, यहाँ से उसने इस तरह से शुरू किया, क्योंकि राइट को मूव कर रहा है, और ये 1 मीटर हुआ. ये कितने हैं, ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है. मेरे ड्राइंग पे मत जाइए, आपको अंदाजा आ गया कि वो डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज इट फेसिंग. तो ये डायरेक्शन, तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको ये अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अगर आप पहले से बना दे, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ कहाँ जा रहा है, इज गोइंग टूवर्ड्स द साउथ. ओके, यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग नाउ? Yes, south, 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 south. Very good. Okay, all of us will go to South India and enjoy after the exams are over. Right? We'll go for a student conference in Chennai or Pondicherry. I would really like to visit Pondicherry. Okay. Chal. Now, next question. Chani, Bhumika, Himanshi, Isha, Ibrahim, Kiran, Nairitya, Palak, Sabera. Okay. So Arun started from point A and walked 10 kilometers to the east, to the point B. So A to B. Then to point B. Turned north and walked 3 kilometers from B to C. Okay? And then turned west and walked 12 kilometers from C to D. Then again turned south, walked 3 kilometers from D to E. In which direction is he facing? 10, 3, 12, 3. Okay. So, suppose my starting point is here. Arun starts from a point A. Okay. Arun is starting from a point A and walks 10 kilometers towards the east. So, east, है ना? 10 kilometers towards the east to the point B. So this is 10. Then this is his left hand side. Okay, यहाँ से यहाँ तक आया तो ये उसका left है. Point B to go moves north to point C 3 kilometers. हाँ, यहाँ पे आ गया. North तो इस direction में हो गया. So north 3 kilometers to the point C. Then this is his left hand side. ये हो गया उसका point C. ये हो गया उसका point B. ये हो गया point C. Then he turns west and 12 kilometers. यहाँ से west कहाँ है? देखिए, इसलिए north, south, east, west. He is here. They are saying go west, तो यहाँ जाएगा. How many kilometers? He is going 12 kilometers. नीचे 10 किलोमीटर है, उससे लंबी लाइन आएगी. Okay, so this is his D. This is point D. And then he moves south to 3 kilometers. ये भी 3 kilometers है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा. ये उसका end point आएगा. So this is his end point. Now what is, in which direction is he facing from the start point? है ना? ये वाला आप
4 करके रखे, इज फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट। ये जो है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल वाला जनरल है, वो वाला किया, उसके बाद जो स्टार मार्क किए वो वाले किए, तो आपको सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप कर पाएंगे। सो दिस इज हिज फ्रॉम द पॉइंट स्टार्ट पॉइंट। ओके, so this is the start point. From the start point to go to the end point, in which direction will the person move? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक चलने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? ये इस डायरेक्शन में जाएंगे। अरुण, अरुण को स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट को जाने में इस तरह से जाना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है। सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, सो सी विल बी द आंसर। Okay, very good. Now everybody is getting good answers. Yes, very good. Don't forget to press the like button, those of you who are on YouTube. विवेक जी को अनम्यूट कर देंगे? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरे यहाँ से ना चैट नहीं हो पा रहा है आपसे। नहीं, आपको इस पे जाना पड़ेगा। पोर्टल पे नहीं है क्या? मैम मैं जूम पे हूँ मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और 5 मिनट के लिए अनेबल हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। आप वहां पे पोर्टल पे आप लॉग, मतलब यहाँ पे देखिए, लेकिन पोर्टल पे लॉग इन करिए तो आप चैट वहां से भेज सकते हैं। मैं ओके दोनों ओके जगह के चैट, यहाँ की डिसेबल हो गया ना, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो ओके इसलिए ओके उसको मैम, और एक क्वेश्चन था मेरा हाँ कि मैम ये हमारे स्टडी मैट से ही आएंगे ना सारे क्वेश्चंस? हाँ हाँ हाँ, उसमें उसमें ही वेरिएशन आएगा। अब वो ओके ओके वैसे का वैसे उठा के नहीं आएगा ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ए स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो उसमें इधर उधर तो होगा ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत। जी जी जी, ओके लेकिन ओके आप मैम। ये वाले करेंगे ना, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, वो इसी तरह से आएंगे। ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। thank you. Yes, welcome. Okay, as A starts from a point and walks 5 kilometers to north, 5 kilometers to north, then turns left and walks 3 kilometers. Again turns left and walks 5 kilometers. In which direction is he now going now? Okay, 1, 2, 3. So he's starting here. This is his start point. So he walks 5 kilometers to the north. 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ, ये उसका लेफ्ट हैंड हुआ। ये आपको अभी नहीं इतना लगेगा कि क्या बार बार लेफ्ट लिखती हैं, लेकिन जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों लिखा। सो 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर टू दी वॉक 3 किलोमीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ पे उसका लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। यहाँ ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये एक लाइन में होने चाहिए। फाइंड आउट पॉइंट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग, तो इस तरह जा रहे हैं ना, इस तरह जा रहे हैं। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, सो विच ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन इज साउथ, सो बी विल बी द आंसर। Yes, Pari, hello. Okay, now a rat runs 20 kilometers towards the east, turns right, runs 10 kilometers. Sorry. Turns right, runs 10 kilometers. Again turns right and runs 9 kilometers. Again turns left, runs 5 kilometers. Then turns left, runs 12 kilometers. And finally turns left and runs 6 kilometers. अरे बाप रे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Okay. So north, east, south, and west. Okay. North, east, south, and west. Now, this is his starting point. अभी हम लोग देखते क्या क्या करना है. He runs 20 kilometers towards the east. तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना वो. So 20 kilometers to the east. His left hand side is here. Then turns right. Okay, turns right 10 kilometers. So 10 kilometers, turns right 10 kilometers. Then his left is here. Okay. Then turns right and goes 9 kilometers. Okay, so this is 9 kilometers to right. His left is here. Then turns left and goes 5 kilometers. So this is 5 kilometers. His left is here. Then turns left and goes 12 kilometers. ये 9 है, उसके थोड़ा बाहर जाएगा. ठीक है, ये 12 किलोमीटर्स है. उसका लेफ्ट हैंड साइड हियर है. एंड लेफ्ट गोज 6 किलोमीटर्स. ये 5 किलोमीटर्स है, उसके ऊपर जाएगा. ओके, सो दिस इज 6 किलोमीटर्स. तो दिस इज हिज एंड पॉइंट. Okay, he's going in this direction. Now what direction is the rat facing? चेहरा किस तरफ है उसका? तो जा कहाँ रहे हैं? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ. ऑब्वियसली हम लोग उल्टा होके तो नहीं चल रहा है, रैट भी सीधा ही चल रहा है. तो उसको रैट की डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन कौन सी होगी? वो भी नॉर्थ होगी. ठीक है, बिकॉज इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ही इज फेसिंग द नॉर्थ. ओके, वेरी गुड. तो आप देख रहे हैं ना कि ये 5 क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप थोड़ा सा शांति से सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाले मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मतलब जल्दबाजी में ना करें. A driver left his village and drove north for 20 kilometers, after which he stopped for breakfast. ठीक है, ये इधर लिख रही हूँ क्योंकि अभी खाना पीना भी दिख रहा है इसमें. So he goes north 20 kilometers, from which he has stops for breakfast. Then he turns left and drives another 30 kilometers. So he stops for lunch. After some rest, he turns left and drove 20 kilometers before stopping for evening tea. Once more, he turned left and drove 30 kilometers to reach the town where he had supper. आफ्टर इवनिंग टी. अच्छा देखिए, एंड वाला नहीं पूछा. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नाउ. ओके, because they are not asking you where you reached the end. What they are asking you right now is in which direction after evening tea. मतलब यहां से चलने के बाद in which direction did he travel. ठीक है, so you have to also make sure that you're reading the question correctly. So driver is here. He goes 20 kilometers. Driver is here. He goes 20 kilometers. Then his left is here. He turns left, goes 30 kilometers. This is his left. Turns left, goes 20 kilometers. This is his left. Again he's turning left. So he's reaching here at the starting point. ठीक है, ये उसका starting point है, because this is also 30. So it's forming a perfect rectangle. What is happening here is, now from A he drove to north. Okay, यहाँ जो point है ना, वहां उसका ब्रेकफास्ट है. After 30 kilometers, he stopped for lunch. After lunch, he turned left and stopped for evening
टी और घर आके उसने सफर किया. सो इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव आफ्टर द इवनिंग टी. यहाँ पे चाय पीने के बाद किस डायरेक्शन में गया है? दिस इज हिज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. इस डायरेक्शन में गया है ना, इस डायरेक्शन में गया है, माने कौन से डायरेक्शन में? इन द ईस्ट डायरेक्शन. इन द ईस्ट डायरेक्शन. राजवीर, नॉट साउथ. चाय पीने के बाद, लंच के बाद वो साउथ जा रहा था, लेकिन चाय पीने के बाद वो उसके राइट हैंड साइड को जा रहा है, तो वो राइट हैंड साइड क्या हुआ? ईस्ट में जा रहा है. A man is facing east. Is facing east, then he turns left and goes 10 meters, then he turns right and goes 5 meters, and then goes south 5 meters, and and to the south 5 kilometers, and from there 5 meters to west. Okay. Or everything in meters, not kilometers. Okay. In which direction is he from the original place? Okay. ये अलग से आ गया कि in which direction from the original place. So a man is facing east. ये उसका starting point है. He is on the east. So he is, जब वो ईस्ट को, ये आपका ईस्ट है ना, उस डायरेक्शन को देख रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा. ओके, इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा. ठीक है. अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट and goes 10 kilometers. He goes 10 kilometers and then turns right and gives 5 meters. Then goes south. तो यहाँ पे है तो साउथ तो इस डायरेक्शन में ही होगा ना. Then goes south 5 meters and from there 5 meters to the west. 5 meters to the west. meters towards the west. ठीक है. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बिकॉज ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, सो व्हेन ही विल गो देयर ही इज गोइंग टू गो टू दिस डायरेक्शन. ओके. नाउ व्हाट आर दे आस्किंग? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. उसका एंड पॉइंट क्या हो गया? दिस इज हिज एंड पॉइंट. This is his end point. So in which direction is he from his original place? This is the original place. From here he is in the north direction. Okay. From a home, Prerna wishes to go to school. From school she goes towards the north and then returns left and turns right. From her home, Prerna wishes to go to school. From home, she goes towards the north, then turns left, then turns right, and finally turns left and reaches school. Okay. In which direction is her school is situated with respect to her home? ठीक है. अभी इन्होंने कुछ भी डिस्टेंसेस के बारे में मेंशन नहीं किया. They have not said a single word about description about the distances. So let us see. Now here, what is happening is, this is my north, this is my east, this is my south, and this is my west. Okay. And what I'm also going to do is I'm going to add these direction. What will this be?
This will be northeast. This will be southeast. This will be southwest, and this will be northwest. Okay. So now, ये उसका घर है. प्रेरणा is at home. From home she goes north. ठीक है. She goes north. तो ये direction है north. This is her left. Then turns left. Okay. Then turns left. This is her left and turns right. This is her right. This is her L. Then turns left. Okay. So this is home and this is school. This is school. Now let us verify that this is the case. Okay. Which direction is this? This is the northwest direction. Which direction is this? This is the northwest direction. Okay. So you will have B as the correct answer. Yes, very good. Parish, Rupali, Rajveer. Okay. A child walks 25 towards the north, turns right, walks 40 feet, turns right, and walks 45 feet. Okay. Then turns left and walks 20 feet. He turns left again and walks 20 feet. Finally, he turns to the point left and walks another 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 25, 40, 45, 20, 20, 20. Okay. Now he's walking from here. This is his starting point. Okay. What will he do? First thing is he's traveling north 25 kilometers. North 25. This is left 25 kilometers towards the north. Then turns right 40. 40 at right. Then this is my left. Then again 45. Ye 25 is already there. I'm going to cross that. So this will be 45. Okay. So here I have this on the left. So after 45, left 20 kilometers. Then here this is again my left. So again 20 feet. 20 feet. So this is left and another 20. This is 20 and this is 20. Okay. So in which direction is the child from his starting point? This is his starting point. This is his end point. End point. Okay. So in which direction is the child from his starting point? तो ये यहाँ तक पहुंचा है इस डायरेक्शन में मतलब वेस्ट. From his starting point. Okay. From his starting point. Okay. उल्टा नहीं पूछ रहे. स्टार्टिंग पॉइंट से वहां जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ईस्ट जाना पड़ेगा. Okay. स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द ईस्ट. मैं यहां से वहां कर रही थी ना, तो दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, यहां से यहां जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में? यू हैव टू गो टुवर्ड्स द
east, and therefore you are getting this this. Yeah. Raju is facing. I hope everybody is. Sorry. Yes, Somil. Please unmute Somil. मैम ये प्रीवियस वाले का आंसर वेस्ट होगा ना मैम स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट में है ना अपना कौन से ये 10th वाला? यस मैम In which direction is the child from his starting point? स्टार्टिंग इसका मतलब क्या होता है कि स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट में जाने के लिए मैम कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन? ये लिखा है ना स्टार्ट पॉइंट, और ये आपका एंड पॉइंट है। पॉइंट इस अपना start वेस्ट point- तो आंसर वेस्ट आएगा ना नहीं ना, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं आप? ईस्ट में जा रहे हो ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। इन विच Okay, ma'am. डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? यहां से यहां जाने के लिए उसको, चलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ईस्ट, क्योंकि ये आपका नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन आप पहुंच तो यहाँ रहे हो ना, तो वेस्ट से ईस्ट को जा रहे हो, तो इसीलिए इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए उसका आंसर ईस्ट है। ठीक है, ओके, we'll do the sum and then take a break. Okay, Raju is facing north and moves 20 kilometers. Then he turns right and moves 20 kilometers. Then he moves northeast and moves 10 kilometers. Then he turns right and moves 20 kilometers. Then he turns right and moves 20 kilometers. And again moves 20. And again he turns left and moves 20 kilometers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Now what we are going to do here is, Raju is facing north. Okay. This is his start point. Okay. Is facing north. वो तो पता लग गया हमें. 20 kilometers. So this is his 20 kilometers. Then this is his left side. He will turn left, go another 20 kilometers. Then he goes northeast. Okay. अभी हम यहाँ पे वो डायग्राम बनाएंगे. This is my north and this is my east. And where will my northeast be? This direction. Okay. वो क्या बोल रहे हैं? He moves northeast. इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. अब वो तो यहाँ, और राजू यहाँ पे खड़ा है ना, तो वो क्या करेगा? नॉर्थ ईस्ट. हाउ मच? 10 किलोमीटर्स. तो ये उसका लेफ्ट हो गया, तो वहां पे क्या हो गया? ही टर्न्स राइट टू 20 किलोमीटर. सो दिस इज 10 and this is 20. Okay, this is 10 and this is 20. Okay, he turns right and goes 20. तो ये उसका लेफ्ट है. अगेन he turns right and goes 20. Okay, and then he goes 20. Okay, the goes 20, and then he's on the left hand side is here, and then turns left and goes 20. तो यहां से वो 20 किलोमीटर जाके इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस इज हिज एंड पॉइंट. दिस इज हिज एंड पॉइंट. ओके, तो आप अप्रिशिएट करेंगे, ये 10 किलोमीटर है, आने के बाद ये 20 किलोमीटर हो जाता है.
So now in which direction is he facing? तो ये मेरे को मालूम है कि ये direction है. So this is the direction because he's going in this direction. So what is this? This is the southeast. Okay, this is the southeast. So this will be your answer. Okay. Yes, very good, Pari Rajveer. Okay, I hope everybody has understood this. So now let us take a short break, and when we come back, we break ले ले 5 minutes 5 minutes.
Welcome back. Okay, so now this is a little different question. Okay, so what I'm going to do is I'm going to draw here. Normally we talk about the north, south, east, west. Okay, now all the directions in this question we are talking about north, northeast. Okay, so what is this? This is my northeast, right? What is this? This is my southeast. What is this? This is my northwest. And what is this? This is my southwest. Okay. So these are the directions. Now let us write down what is given to us. K is a place which is located 2 kilometers in the northwest direction, 2 kilometers from the capital P. So I have P to K. Okay. From P to K, it is northwest direction from the capital. Okay. R is another place which is located 2 kilometers away in the southwest direction. Southwest direction, 2 kilometers from K. So from K southwest, इसको थोड़ा पास लिखती हूँ मैं. Okay. From K southwest direction में जाएंगे 2 kilometers. So I have R. Okay. R is south of K. M is another place located 2 kilometers away from the northwest direction from K. So northwest 2 kilometers is M. T is yet another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from M. So this is T. So P, K, R, M, T. 2, 4, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Okay. In which direction is T located from P? Okay. Is in which direction is T located in relation to P? Okay. P क्या है आपका? ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. सौमिल आप भी ध्यान दीजिए. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और T क्या है? आपका एंड पॉइंट है. तो क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को वो इन विच डायरेक्शन इज लोकेशन ऑफ टी इन रिलेशन टू पी. ठीक है. इस तरह से हमें देखना है. तो ये अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा पी है, देन आई हैव टू मूव इन व्हाट? आई हैव टू मूव इन नॉर्थ वेस्ट. ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है. तो दिस इज माय नॉर्थ वेस्ट. कितना जाएंगे? 2 किलोमीटर्स. उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे हम? के पहुंचेंगे. देन साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट माने इधर. तो साउथ वेस्ट जाएंगे and we are going to reach what? We are going to 2 kilometers and I'm going to reach R. From R, northwest. Okay. So northwest 2 kilometers. I'm going to reach M. Then southwest. From M, I go 2 kilometers southwest and I reach T. Okay. So what is happening? This is my end point. And this is my start point. Okay, so my T is my end point. What is the direction of T in location in respect to P? अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे लेफ्ट में T है. नॉर्मल केस में लेफ्ट में T है तो मतलब क्या हो गया? लेफ्ट में मतलब वेस्ट में है. ओके. वेरी गुड प्रतीक्षा. अभी Babu is Rahim's. Okay, Rahim, Babu, 200 meters. Babu is Rahim's. My house is in the northwest direction. Northwest 2. Joseph
is Rahim's neighbor and is 200 meters away in the southwest. 2 is Joseph. Gopal is Joseph's neighbor. Gopal is Joseph's neighbor and stays 200 meters away in the southeast direction. 200. Gopal is Joseph's neighbor in southeast and he stays in the south. Roy is Gopal's neighbor. Roy is Gopal's neighbor 200 meters in the northeast direction. 200 is Roy. What is the position of Roy in relation to Babu? अभी मैंने सब रेड में लिख दिया. ये ठीक है. ये बाबू जो है is the starting point and Roy is the end point. ठीक है. What is the position of Roy's house in relation to Babu? मतलब बाबू से रॉय को जाने के लिए कौन से डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा. ओके, अब ये तो हमें theoretical आ गया. Now let us try to draw this. This is my north, south, east, west, and then I will try to draw this. Okay, this is my northwest, this is my northeast, this is my southeast, and this is my southwest. So, if Babu is here, okay, Babu is here, which is also the starting point, northwest direction is Rahim. Northwest direction. Babu is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction. This is Babu. Rahim to Babu is northwest. Okay, so Rahim is here. So this is northwest. 200. Okay. Then Joseph is southwest. From this is Rahim. Southwest. Joseph. ये 200. ये है ना southwest. So this is Joseph. Then Gopal is southeast. Southeast is this direction. Okay. This direction. So this will be Gopal 200 meters southeast. Then northeast 200. Northeast 200 is Roy. So 200 is Roy. 200 meters northeast. Okay. So where this is my end point. My starting point B is here. My end point Roy is here. From B to Roy, I'm going in this direction. What is this direction? This is the southeast direction. Okay, so this is how you will get the southeast direction. A tourist travels southeast, Rupali, southeast. A tourist travels 10 kilometers towards west. West 10 kilometers, turns left and takes a drive for another 4 kilometers. Then he turns east another 4 kilometers. Then he turns right another 5 kilometers. Afterwards, he turns left and 6 kilometers. In which direction is he from the starting point? Okay, from the starting point, in which direction is he? So, tourist is here. He drives west 10 kilometers. This is his left. He turns left, goes 4 kilometers. This is his left. Goes east 4 kilometers. Then this is his left. Goes right 5 kilometers. And then this is his left. Takes left 6 kilometers. So 6.
अगर ये 4 है तो ये 6, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका जो एंड पॉइंट है ना, दिस इज हिज स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज हिज एंड पॉइंट. So in which direction is he from the start point? From the start point and end point is which direction? This direction. Which direction is this? This is the south direction. Yes, very good, Rupali. Okay. आज दिवाली के बाद बहुत सुस्ता गए, कम आंसर्स आ रहे. A man starts walking west. He turns right, then turns right, and finally turns left. Which direction is he? Yes, Satyam. Please unmute Satyam. Yes, Satyam. Tech support, please unmute Satyam. Okay. So this is my start point. Let me मैम see. आंसर्स हाँ. पोर्टल पे नहीं जा रहे क्या? क्या हो रहा है? मैम आंसर्स पोर्टल पे नहीं जा रहे क्या? हाँ, आप नहीं, बाकियों के आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे. अभी हिमांशी का भी आ गया, रूपाली का आ रहा है. क्वेश्चन आंसर क्या है, वो नाम नहीं ले रही हैं. हाँ, नहीं नहीं, आप देख लो. अ, इसी इसी सेशन के लिए आप आंसर कर रहे हैं कि नहीं, पोर्टल पे देख लीजिए. शायद आप मॉर्निंग सेशन पे कुछ लिख यस रहे हैं. मैम, लाइव वाले पे कर रहे हैं. नहीं, यहाँ आपका नाम नहीं आ रहा है बेटा. ये कर लीजिए, वापस से लॉग इन करके देख लीजिए. ओके मैम. हाँ, ठीक है, आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. और आपके आंसर सही आ रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जैसे एक बार लॉग ऑफ कर, मतलब लॉग आउट करके वापस से लॉग इन कर लीजिए. A man starts walking towards walking west. Okay, he walks west. This is his left hand side. Then he turns right. So this is his left. Then he again don't write this here. Okay, he turns right. Then he again turns right. Okay, so this is his left. So again, so एक बार राइट हो गया, 2 बार राइट हो गया, और वो वेस्ट और वो लेफ्ट जा रहा है. इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग टूवर्ड्स? इस डायरेक्शन में जा रहा है. ये डायरेक्शन तो नॉर्थ है. ये मतलब मैंने क्वेश्चन बस खोला था, उससे पहले ही सबके आंसर्स आ गए. वेरी गुड हिमांशी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती हूँ ताकि फिर क्या हो जाएगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझ कर पाएंगे. क्योंकि मुझे आपका थोड़ा सा वो ये भी लेना है, कोडिंग वाला. One evening Raja walks towards the sun. Okay, one evening. Okay, so this is very important that you see, it is one evening he walks towards the sun. So शाम को सन कौन से डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में, है ना. इवनिंग, सन इज इन द वेस्ट डायरेक्शन इन द इवनिंग. तो अगर यहाँ पे राजा खड़ा है, ठीक है, तो वो किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, वेस्ट टुवर्ड्स द सन. व्हाइल वॉकिंग अ व्हाइल ही टर्न्स टू हिज राइट. ये उसका लेफ्ट है, तो ही वॉक्स टुवर्ड्स हिज राइट. ये वापस उसका लेफ्ट है, तो वो वापस ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द राइट. एंड आफ्टर अ व्हाइल ही टर्न्स राइट. तो ये उसका लेफ्ट है और ये उसका राइट है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है. एंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया साउथ. ठीक है, तो इस बार मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया. नाउ 5 boys
16 का डी सत्यम नहीं इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग द साउथ डायरेक्शन ये आई थिंक अगर मॉड्यूल में दिया है तो वन इवनिंग है ना तो उससे शायद आंसर ऑपोजिट आ रहा है बिकॉज इफ इट इज इवनिंग एंड ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द सन ही शुड बी वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट ओके 5 boys A, B, C, D, E are sitting in a park in a circle. So this is the circle. Okay. A is facing southwest. Satyam, I can see your answers now. Okay. नहीं परी डी नहीं होगा क्योंकि वो मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बात है उन्होंने नॉर्थ दिया है लेकिन मेरे हिसाब से तो वो साउथ आता है 5 boys A, B, C, D, E are sitting in a park in a circle. A is facing southwest. ठीक है दिस इज माई नॉर्थ साउथ तो साउथ वेस्ट कौन सा हुआ ये डायरेक्शन हुआ ए इज फेसिंग तो यहाँ वो उसको ए को बैठा दिया डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट डी ये साउथ ईस्ट है ना सो डी इज फेसिंग हियर डी यहाँ बैठा है तो उसका उनका मुंह जो है वो साउथ ईस्ट फेसिंग हो जाएगा बी एंड ई आर ऑपोजिट ए एंड डी बी जो है ऑपोजिट ए है और ई जो है वो ऑपोजिट डी है एंड सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी सी कहाँ बैठा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस मैंने दोनों में के एकदम बीचों बीच बैठे हैं सी सो विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग तो ये मेरा ईस्ट हो गया ना इस डायरेक्शन को फेस करे सी जो है वो इस डायरेक्शन को फेस करे तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर Yes, very good. East will be the answer. If a man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers to the south, turns left and rides 2 kilometers, then turns and turn again to the right to ride to go more towards which direction is he moving? ये थोड़ा सा इंग्लिश ठीक नहीं लग रही उसकी बाकी तो ठीक है क्वेश्चन अ मैन ऑन अ मोपेड स्टार्ट 4 किलोमीटर्स टू द साउथ ठीक है तो यहाँ पे आ रहा है तो ये उनका लेफ्ट है एंड ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर्स तो ये उनका लेफ्ट है लेकिन फिर वो क्या कर रहे हैं एंड टर्न अगेन टू द राइट टू गो टर्न राइट ये उनका लेफ्ट ओ सॉरी ये उनका लेफ्ट है ये नहीं लेफ्ट एंड ही टर्न्स टू द राइट टू गो टुवर्ड्स विच डायरेक्शन तो इधर जा रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है दिस इज द साउथ डायरेक्शन ओके अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 8 kilometers to the north 8 kilometers to the north क्या हो रहा है 8 kilometers to the north, turns right and walks 12 kilometers, turns left, walks 7 kilometers, left and walks 7 kilometers, turns and walks 20 kilometers towards the south, turn 20 to the south, turns right and walks 12 kilometers. In which direction? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. ये वाले जो क्वेश्चंस है ना उसको आपको ज्यादा केयरफुली करना है क्योंकि देखिए लेफ्ट राइट भी यूज कर रहे हैं नॉर्थ साउथ भी यूज कर रहे हैं ठीक है तो अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ही इज स्टैंडिंग हियर एंड ही वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 8 kilometers टू द नॉर्थ ये हो गया उसका 8 kilometers टू द नॉर्थ तो ये हो गया तो दिस इज हिज लेफ्ट हैंड साइड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 kilometers तो ये 12 kilometers हो गया तो ये उधर उसका लेफ्ट है उसके बाद टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 kilometers ओके ये हो गया उसका 7 kilometers एंड वॉक्स 20 kilometers टुवर्ड्स द साउथ अभी वो इधर देख रहा था नॉर्थ की तरफ तो वापस आएगा कितना 20 kilometers तो ये आप देखिएगा
So he's not only going to come back this 7 kilometers, but he's going to come back remaining 13 kilometers. Okay. So he comes back here and his left is here. So then he turns right and walks 12 kilometers. ये भी 12 है, ये भी 12 है. So he's walking here. This is his 12. Okay. Walks 12 kilometers. So this is his start point and this is his end point. Okay. Now what are they asking? In which direction is he from the starting point? ये उनका starting point है, ये उनका end point है. तो किस direction में? किस direction में कर रहे हैं? इस direction में, which is the south direction. Okay. Yes. Satyam, Pari, Yash, Rupali. Yes. ओके. ये वाले भी बहुत अच्छे होते हैं. अगर कभी आप यूपीएससी वगैरह दे तो इस टाइप में भी स्टाफ सिलेक्शन में भी आ जाते हैं. Now what is here? Daily in the morning, the shadow of the Gol Gumbaz falls on the Bara Kaman, and in the evening, the shadow of the Bara Kaman falls on the Gol Gumbaz exactly. So I have two structures. One of them is Gol Gumbaz and one of them is Bara Kaman. Okay. Now daily in the morning, the shadow of the Gol Gumbaz falls. So east में sun आता है. Okay. So what I'm going to do? Okay. This is so in the morning the shadow of the Gol Gumbaz falls on the Bara Kaman. तो जिसकी शैडो गिरनी है वो सूरज के पास होना चाहिए और जिस पे गिरेगी वो सूरज से थोड़ा दूर होना चाहिए. मतलब सूरज और जो जिस पे शैडो गिर रही है उन दोनों के बीच में जिसकी शैडो गिर रही है वो होना चाहिए. तो क्या हो रहा है कि डेली इन द मॉर्निंग द शैडोज ऑफ द गोल गुम्बज फॉल्स ऑन द बारा कमान. तो दिस मीन्स दिस इज माय गोल गुम्बज and this is my Bara Kaman. Okay. And in the evening, the shadow of the Bara Kaman falls on the Gol Gumbaz. So obviously ये हो गया. तो शाम का जो है, शाम का सूरज जो है वो यहाँ से आएगा वेस्ट में. दिस इज माई ईस्ट एंड दिस इज माई वेस्ट. ठीक है. तो शाम को क्या होगा? बारा कमान की परछाई जो है गोल गुम्बज पे गिरेगी. सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू द बारा कमान? In which direction is the गोल गुम्बज for the बारा कमान? मतलब बारा कमान से गोल गुम्बज को जाना है, ये इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसका मतलब ईस्ट होगा. ठीक है. क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है कि सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बारा कमान? मतलब बारा कमान से गोल गुम्बज कहाँ तक है? तो इट्स ऑन द ईस्ट डायरेक्शन. अशोक वेंट 8 kilometers south, 8 kilometers south, turned west, walked 3 kilometers, turned north, walked 5 kilometers, finally turned to the east and walked 3 kilometers. In which direction is Ashok from the starting point? Okay. So if this is my starting point, if this is my starting, if this is my starting point, so 8 kilometers to the south, यहाँ से निकले 8 kilometers to the south, ये मेरा लेफ्ट है. देन ही मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट को मूव किया 3 kilometers. उसके बाद क्या हुआ? मूव टुवर्ड, तो ये मेरा लेफ्ट है. लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? वेस्ट के बाद नॉर्थ बोल रहे हैं, तो नॉर्थ बोल रहे हैं 5 किलोमीटर. सो दिस इज 5 किलोमीटर. एंड देन टुवर्ड्स द ईस्ट 3 किलोमीटर. ये 3 है. यहाँ पे ईस्ट क्या है हमारे? ये डायरेक्शन पे ईस्ट है ना. तो यहाँ से इस पॉइंट से ईस्ट को आएंगे तो इस पॉइंट को, इस लाइन को टच करेंगे. ठीक है. यहाँ से निकले, यहाँ पे आए. तो अभी अशोक कहाँ पे पहुंचे? इस पॉइंट पे. तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा एंड पॉइंट है. ठीक है. स्टार्ट पॉइंट यहाँ है, एंड पॉइंट यहाँ है. अभी पूछा क्या है
इन विच डायरेक्शन इज अशोक फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट? स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट्स अ साउथ. ओके, हमें ये मालूम है कि जो पहला वाला हमने बताया था आपको कि अगर कोई बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? वेस्ट. और उसके राइट हैंड साइड पे क्या होगा? ईस्ट. ये अगर सीधा खड़ा होगा तो भी, और इफ इज अपसाइड डाउन और वो साउथ को फेस कर रहा है तो भी ये वैलिड होगा. तो अगर खड़ा है तो भी, और उल्टा हुआ है तो भी. बट खड़ा हुआ है तो नॉर्थ फेस कर रहा है, उल्टे हुए हैं तो साउथ फेस कर रहे हैं, तो लेफ्ट में वेस्ट होगा. सो इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी? इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट. लेफ्ट विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट. ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इसमें आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है अभी. हाँ, I drove east for five miles and then drove north for 3 miles, then turned left and drove for 2 miles and then turned left. Which direction am I going now? उसके बाद डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बताई है. यस, रूपाली, प्रतीक्षा, करेक्ट. So this is my start point. Now this is my north, east, south and west. So east direction में जा रहे हैं ना. I'm going towards the east for 5 miles. Then I drove north for 3 miles. And then I turned left. तो ये मेरा left है. Then I turned left and drove for 2 miles. Okay, तो 2 miles. Then I turned. ये मेरा left है. I am turning left here. ठीक है. So which direction am I going to? I'm going towards the south direction. A standing on this head and facing north. तो अगर हेड पे है और नॉर्थ पे है तो क्या होगा? उसका लेफ्ट हैंड साइड विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट. ओके, अपसाइड डाउन, देन लेफ्ट इज टुवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर. A car is traveling from the south. Traveling from south. ओके, फ्रॉम साउथ. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ है, टुवर्ड साउथ नहीं है, फ्रॉम साउथ. कवर्स अ डिस्टेंस, covers covers a distance of 8 kilometers, then turns right and runs another 9 kilometers, again right and was stopped. Which direction is he facing now? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, अभी इन्होंने क्या है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है. वो गाड़ी चला रहे थे और शायद चेकिंग वेकिंग हो रही होगी पीयूसी यूसी के, तो उन्होंने बीच में रोक दिया उन्हें. तो अभी क्या करना है, कार इज ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ. अगर वो साउथ से आ रही है तो कहाँ जाएगी? वो नॉर्थ की तरफ जाएगी. तो साउथ से फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग 8 किलोमीटर्स, फ्रॉम साउथ 8 किलोमीटर्स. तो ये उसका लेफ्ट हैंड हो गया. तो उसके बाद कहाँ मूव कर रहा है? राइट हैंड 9 किलोमीटर्स. ओके, तो दिस इज इज लेफ्ट हैंड से. लेकिन फिर उसके बाद क्या है, वापस से उन्होंने राइट को मूव किया है. हाँ, इस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं. तो फ्रॉम साउथ जा रहे हैं तो नॉर्थ को जाएंगे कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर्स. देन ही इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट. हाउ मेनी किलोमीटर्स? 9 किलोमीटर्स. फ्रॉम देयर ही इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट. ओके, लेकिन बस वहीं पे उनको रोक दिया गया. तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वो तो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, इज मूविंग टू द साउथ डायरेक्शन. हाँ सत्यम, इजी है चैप्टर. ओके,
बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अचानक से आ जाता है ना, तो कभी कभी बड़ा वर्ड प्रॉब्लम होगा तो हमसे छूटने की शक्यता है, कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे अभी वहां था ना कि सब नंबर्स में लिखे थे, बीच में एक कुछ तभी उन्होंने वर्ड्स में लिख दिया, तो इसीलिए. Okay, a driver commences his journey from a point and drove 10 kilometers to the north. 10 to the north, turned left, drove another 5 kilometers. After waiting to meet his friend here, wo chhod do, he turns left, right, and continues to drive another 10 kilometers. He has covered a distance of 25 kilometers so far, but in which direction would he be now? तो पूछ क्या रहे हैं कि डायरेक्शन कौन सी है. ओके, अभी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ही गोज 10 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ. ठीक है, ये उनका लेफ्ट है. तो उसके बाद लेफ्ट 5 किलोमीटर्स, तो ये उनका लेफ्ट है. एंड 10 किलोमीटर्स, अच्छा ठीक है, अभी जगह नहीं, 10 किलोमीटर्स इधर जाएगा वो. हाँ, 10. तो कौन से डायरेक्शन में है? ही इज फेसिंग नॉर्थ. मतलब इस क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ गए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगे. ए वॉक्स 3 किलोमीटर्स. ए वॉक्स 3 किलोमीटर्स नॉर्थवर्ड्स. Three kilometers northward, and then turns left and goes 2 kilometers. Again turns left and goes 3 kilometers. He turns right and walks straight. In which direction is he walking? ठीक है, यहाँ खड़े हैं इस पे स्टार्टिंग पॉइंट. He walks 3 kilometers towards the north. तो ये उनका लेफ्ट हो गया. फिर लेफ्ट वो 2 किलोमीटर गए. उसके बाद ये उनका लेफ्ट हो गया, वापस से लेफ्ट आ गए 3 किलोमीटर्स. तो ये 3 थे, ये भी 3 है, तो वापस यहाँ तक आ गए. एंड देन ही टर्न, तो यहाँ उनका लेफ्ट है, तो इस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं. सो विच इज दिस डायरेक्शन? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो विच इज दिस डायरेक्शन? दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन. ओके, सो बी विल बी द आंसर. A walks southwards, then turns right, then turns left, and then turns right. Okay. तो यहाँ खड़े थे. He walks southwards. So this is his left hand side. Then turns right. Okay. So this is his left. Then turns left. Then turns. So then this is his left, and then turns right. Okay. So then turns right. So which direction is he? Is he from the starting point? Okay. So most important, because in earlier sums we were not talking about that, and now we are saying that from the starting point. So he is here. So this is his starting point. 1 minute Rohit. This is his end point. तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है? देखिए, आइडियल देखा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है. लेकिन यहाँ तो प्लेन दिया है ना, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये डिस्टेंसेस भी नहीं दिए हैं हमें, तो हमें मालूम नहीं कौन सा डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रेवल किया है. सो बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी से इट इज अ साउथ. यस, रोहित, रोहित को अनम्यूट कर देंगे. Yes, Rohit, you want to say something? Okay. No, ma'am. Okay, thank you. A man starts from a point, walks 15 kilometers towards the east.
Okay, so he walks 15 kilometers towards the east. So 15 to the east, turns left and walks 10 kilometers, turns right and then walks again. So what is happening? He's standing over here. This is his starting point. He's walking 15 kilometers towards the east. So this is his left hand side. He walks 10 kilometers. Again, this is his left hand side. So this is 10 and turns right and walks. Okay. So in which direction is he moving? He's again still moving in the east direction. बस थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वापस से पैरेलली वो वहां पे जा रहा है. ओके, ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे रोकती हूँ. अगर कोई सा पर्टिकुलर सा सम है, हाँ, ये 31st में ले लेती हूँ आपको. ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग? I stand with my right hand extended towards the south. See, what is happening here is, this is my, with my right hand. Okay, तो ये सचिन तेंदुलकर का राइट हैंड है, ये साउथ है. ठीक है, अगर मेरा कोई भी यहाँ पे साउथ है तो हमें मालूम है कि सर्कुलर मोशन में ये क्या जाएगा, ये वेस्ट में, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो साउथ से बाद में वेस्ट आएगा, वेस्ट के बाद में नॉर्थ आएगा और नॉर्थ के बाद में ऑपोजिट टू वेस्ट ईस्ट आएगा. ठीक है, ये तो हमें मालूम हो गया. सो इफ हिज राइट हैंड इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द साउथ, इन विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी? तो ये देख किधर रहे हैं, ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये साउथ है तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ होगा, है ना. तो आगे पीछे वेस्ट और ईस्ट होगा. तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये उनकी पीठ जो है वो वेस्ट को होगी. So this will be the answer. Okay, and 33rd I will just say, if Mohan sees the rising sun behind the temple, sees the rising sun behind the temple, तो ये उन्होंने okay, this is the temple. If Mohan sees the sun behind the temple, rising sun behind the temple, and the setting sun behind the railway station. So there is a railway station. So there is a railway station. ओके, सो यहाँ पे उनको सेटिंग सन दिख रहा है. From his house. Okay, so he's standing here. So he can see the rising sun behind the temple and he can see the setting sun behind the railway station. So in which direction of the station, what is the direction of the temple from the railway station? यहाँ से वहां तक, रेलवे स्टेशन से मंदिर तक कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम में भी आपको बस थोड़ा सा देखना है कि आपको कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है, वही बस देखना है आपको. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको वो ऑड मैन आउट वाला ले लेती हूँ. ठीक है, हाँ, और उससे पहले वो वाला भी ले लेती हूँ. देखो कुछ ओल्ड वाला था ना कुछ. हाँ, ये वाला हमने आधा शुरू किया फिर छोड़ दिया था. Okay, if lose is 1357 and gain is 2468, what does this stand for? 82146. यहाँ तक हमने किया था, फिर मैंने बोला था कि आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि बहुत इजी है इसीलिए मैंने छोड़ा था. लेकिन फिर किसी को
थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो बता देती हूँ। अभी 8 के लिए क्या है, देखिए आप यहां से देख सकते हैं 8 के लिए क्या है, n है, तो आई एम गोइंग टू राइट n। क्या होगी, सो दिस इज n। 2 के लिए क्या है, g। 1 के लिए क्या है, l। 4 के लिए क्या है, a। और 6 के लिए क्या है, i। n g l a i, n g l a i। देखिए a और b कितना सिमिलर है, तो n g l a i, सो a विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये सबेरा, तो सबेरा को अनम्यूट कर दीजिए। एक मिनट है सबेरा। Yes, Sabira, can you talk now? I'll just unmute you. Okay, tech support, please unmute her. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, can you explain 51 number question? 51. That we Yes. have already done, beta, last time. Okay. I'll just quickly tell you. Otherwise, you can also, I'll just tell you quickly here. But you can also refer to the video, last video. I think that was the last sum we had done. So in a certain code, 256 means you are good. 256 means you are good. Okay. This does not mean कि 2 को you है, 5 को R है, ऐसा मतलब नहीं होता. Okay. It doesn't mean, it just means that it's jumbled. Okay. I still don't know. 256 means you are good. And then they are saying 637 means we are bad. Okay. 637 means we are bad. तो आप देखेंगे 256 और 637, what is the common number? The common number is 6. Okay. In 256 and 637, the common number is 6. What is the common word over there? You are good and we are bad. Okay. So what is the common word? So 6 and R. Okay. So it means 6 को कौन सा है, R मिल गया. इसी तरह से हमें करना है. Then 358 means good and bad. 358 means good and bad. So if I compare the first 256 and 358, I can see 5 is common. Okay, 5 is common. So what is a common word between you are good and bad? The word is good. So 5 is good. Okay, यहाँ लिखा ही है मैंने. इसी तरह से सेकंड और थर्ड में कंपेयर करेंगे. 637 and 358. What is the common? 3. What is the common word? Bad. And this way we are doing. So एलिमिनेट करते जाएंगे. लास्ट में क्या बचेगा? 8 बचेगा और 8 का क्या है? एंड. ओके. नाउ कमिंग टू दीज क्वेश्चंस. बहुत बार ऐसा होता है कि ऑड मैन आउट में ना, जब हमें आंसर पता लगता है तो लगता है हे भगवान इतना सिंपल था, मुझे क्यों नहीं सूझा. तो यू आर नॉट गोइंग टू बीट योर सेल्फ अप. आप अपने आप को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. थोड़े थोड़े दिनों बाद वापस देख लीजिएगा, याद आ रहा है क्या कि इसका क्या था लॉजिक. ठीक है. सो नाउ वी हैव 3, 5, 7, 15, 17, 19. ओके. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल के देखते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 3 + 5 इज 3 + 2 is 5. 5 + 2 is 7. But 7 + 8 is 15. फिर +2 is 17. +2 is 19. ओके. तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसके बाद क्या आना चाहिए था, ये गलत है, तो 15 है. तो इसके बाद क्या है, लेकिन आगे के नंबर्स जो है ना 17, 19, तो उसमें ऐसा भी है कि ब्रेक हो रहा है. लेकिन और इसमें एक और बात भी है कि 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ऑल द अदर नंबर्स आर
प्राइम नंबर. सो दोनों लॉजिक में से जो लॉजिक उस समय आपको सूझेगा वो यूज कर लीजिएगा. ओके, so 15 is not prime, otherwise 3, 5, 7, 17, 19 all are prime. Okay, now 10, 14, 16. ओके, ये भी मार्क करके रखिए, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट नंबर है ना वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया है. बहुत बार ऐसा होता है कोड्स में कि हमारा फर्स्ट जो रहता है ना, स्पेशली एल्गोरिथम्स वो सब बनाते समय, तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट विल सी. ओके, 10, 14, 16, 18, 23, 24 and 26. Okay, so what is happening here? This is +4, +2, +2. यहाँ पे क्या हो रहा है? +5, +1, +2. Okay, so if I don't consider this, so 14, 16, 18, everything is +2, but this 23 is causing a problem. So what is the answer? B will be the answer. That is what I'm saying. So that is, sometimes it happens that the first number we are not considering, और वैसे भी ऑप्शन में वो 10 है ही नहीं, तो हमें उसको छोड़ के ही करना है. तो उसमें से 26, 24, 26 तो +2 में आ रहे हैं ना, 18 भी करेक्ट है, तो बचा क्या? 23 अगर नहीं होता तो हमारा जो सीक्वेंस है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है. 54, odd even in this question. Okay, just a minute. 10, 14, 16. In 53, Shoaib, are you asking? हाँ सम्मिल बोलिए. मैम 24 भी तो हो सकता है. क्यों 24? क्यों मैम, उसमें +1 है ना +2 की जगह. नहीं, जिससे गलती शुरू होती है ना उसको ही पकड़ा जाता है, बाद में तो अपने आप से गलती हो जाती है ना. 23 की जगह अगर 22 होता तो 24 ठीक ही हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे. ओके मैम. गलती यहाँ से शुरू है ना, 18 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था? 20 ना, 20 आता तो ठीक हो जाता. हाँ, यस, हु अदर्स? परी क्या बोलेंगे? मैम इस वाले में मैंने लॉजिक लगाया था कि जो 23 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, बाकी जो डिजिट्स है वो सारे 2 से डिविजिबल है. तो मैं हाँ, वैसे भी कर सकते हैं. ओके, वो सिर्फ ऑड नंबर है. हाँ शोएब, शायद आप वही बोल रहे हैं. शोएब भी बोल रहे हैं कि वो ऑड है, बाकी सब इवन है. ओके, यस, दैट इज आल्सो वेरी वैलिड दिस थिंग लॉजिक. ओके, गुड. नाउ 1, 4, 9, 16, 24, 25, 36, इसमें तो दिस इज अ नो ब्रेनर. सब जो है स्क्वायर्स है, सिर्फ 24 स्क्वायर नहीं है, तो बी विल बी द आंसर. ठीक है, 1, 4, 9, 16. इसीलिए मैं 200 बार हर बैच में बोलती हूँ कि प्लीज यू मस्ट नो योर स्क्वायर्स एंड योर क्यूब्स, क्योंकि ये देख के आपको पता लग जाता है. ओके, यस शोएब, दैट्स करेक्ट. ओके, now 41, 43, 47, 53, 61, 71. So difference is +2, +4. Then this is how much? +6, +8, +10, +12. तो ऑब्वियसली, और इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं. एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, ओनली 75 इज डिक्रीजिंग. ओके, सो इसमें एकदम सिंपल, बस देख के पता लग रहा है. मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं. 41, 43, 61, 71, 83, सब these are all in the ascending order. Only 175 is coming down. So that is why obviously that will be the answer. Then 56 again, 16. This is a square, 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 this is a square. कौन स्क्वायर नहीं है? 73. So 73 will be the answer. हाँ रूपाली, 75 पहले वाले क्वेश्चन में. ओके, तो इसी तरह से आपके सब आंसर्स आ जाएंगे. इसी तरह से कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है,
ये बाकी सब तो हमने किए हुए हैं, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। Okay. Yes. I think that covers up everything between whatever was happening in directions, and as well as the odd man out that was remaining in the earlier one. Just a minute. कोई क्वेश्चन है क्या जो मुझे आपको बताना बहुत मन कर रहा है? हाँ 33 किया है क्या हमने? हाँ 34 भी कर लिया, 33 भी कर लिया, ठीक है, इसमें से कोई बचा नहीं है। ये 36 दैट्स अ सिंपल वन, ठीक है। कैलिकट को क्या देना है? $42. If gold is written as IQNF, how wind will be written as GOLDIQNF? EFGHIOPQLMNDEF, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक बीच में एक अल्फाबेट रहेगा। सो इफ आई हैव wind, what will happen? W X I J M N O D E, ओके। तो इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा? W X Y I J K M N O P D E F, YKPF, YKPF, ओके। 43 भी सेम है। इफ रोज इज रिटन एज, सो रोज एंड TQUG RST, ये जो बीच में है RST OPQ, तो BCDIJK STUCDE UXYIJKTSTUV DKUEYKV DKUE, ये गलत हुआ क्या? UVW, यहाँ Y नहीं है, यहाँ W है, एक डिफरेंस है ना। DKUEWKV, so this will be the answer. हाँ 47th, हाँ ये भी कर लिया हम लोगों ने, CD। तो इसमें क्या है, D से -1 -2 -3, तो उस तरह से आप बॉम्बे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ले तो सभी लिया था, सिर्फ वो ऑड मैन आउट रह गया था, वो भी हो गया अभी, ओके। सो आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू ऑल।